Hello, welcome my dear friends. I welcome you all. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande, and soon I will like to start our this new video with very important topic. So in spite of talking a lot, I will like to share my screen today. So yes, yes, my dear friends, you all are welcome. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande. I welcome the students of medical fraternity. They may be Ayurvedic, allopathic, homeopathic, all are looking this my YouTube channel. So I am thank you to all of them. Not only students, but many teachers are admiring me, my efforts. I am thankful to all the teachers as well. Then there are practitioners who are also giving me stimulus. Doctor, please talk about Ayurveda. Doctor, please talk about this thing. Doctor, please talk about that thing. So all these doctor friends, I am very thankful to you. And last but not least, there are so many, what you can say, the patients or the society people who have the different problems. They also check these my videos whether Dr. Deshpande is giving some guidance, some solution, some basic understanding of the disease, and then they further come to me for the further expert consultation. So I thanks to the students, teachers, doctors, as well as the society people. Thank you very much for following me on my YouTube channel. Still, the request will continue. Please subscribe my YouTube channel, make the like, make the share with this nice of the important topics that we face across our what you can say the living road. Okay, so today's topic is worms. Worms are in a scientific language are called as Helminths. I think before going into the detail, I would like to make my screen bigger so that there will be more enjoyable thing. So let us make the screen more big. So I will go for slideshow. Yes, here it is. The worms, very big screen. Okay. So worms, मराठीमध्ये ज्याला आपण जंत म्हणतो, आयुर्वेदामध्ये ज्याला कृमी. In Ayurveda, the word is a krumi. That was mentioned by the Charak Sushruta and Vagbhat 3000 years back, the different types of the krumi. And these people, those people were knowing that these particular micro creatures cannot be seen by our naked eye. So they have given their different names. But today, what we have found out by our microscopic development, that these are the different worms or the helminths, Ascaris lumbricoides. Then there is a pinworm. There is a tapeworm. Then this is also a type of tapeworm. So there are the different types of the what I can say the different types of worms. I am going to talk in detail about all these types of the worms. Just this is a pictorial catchy picture that you can continue my video till the last minute. So this is presented. This is actually the series, the medicine classes, online medical medicine classes. So there are few charitable or the complimentary or the few classes that I take, and this is one of that particular serial, digestive tract problems in our GP, general medical practice, presented by myself, Dr. Deshpande, MD in Ayurvedic medicine, that is Kaya Chikitsa, and Ayurvedic physiology, that is the Sharira Kriya Vijnana. So this is my personal, what you can say, the website, ayurvedicfriend.com. This is my WhatsApp number. Kindly note it down, 922-6810-630. Then there is a mail ID. So I prefer to give you the consultation, to talk with you, to communicate with you, please through the mail, because it is very difficult to talk for a longer time on the phone, because I'm very sorry to say, but I remain busy all the time. So I cannot talk for a longer time on the mobile. So you can message me, and after messaging, you can directly mail me. professordeshpande@gmail.com. Mind well, this is a what you can say the sensitive to the capital and small letter. So be careful while making this typing. So all of you are always welcome for my different services on this mail, professordeshpande@gmail.com. I give the advice, online consultations with my team of doctors. Myself is working with the
3, 4, 5 doctors, national level and international level. From 1994 to 2014, I used to visit the different countries like America, Switzerland, Germany, Italy, and Spain. And so we have made the team. Still, we are working at international level. In the ports or we run the health center. Okay. So I give the online advices, then lifestyle counseling. Basically, I have the focus lifestyle counseling, Jeevana Shaili Paddhalचं Margadarshan. That is based on Ayurvedic aspect like Prakruti as well as the Hasta Samudrika or Palmistry. Yes, my dear friend, I also do the Palmistry because this is a very complementary science for my Ayurveda. I believe that. Okay, personal and online classes. Here, there are lot of queries are there. I am not regularly conducting online classes. These are my classes. Actually, what you are seeing right now. I do the services, those who are, what you can say, the personalized type of the demand. Suppose one student is very weak in anatomy. One student is say that I want some topics from the Nidan. For example, arm concept I want to clear. Somebody will talk, no, I want a little bit from Kai Chikitsa. So this is personalized training, personalized classes for single student or maximum group of students. For example, 10 students can come to me, give me the application, apply on the Gmail, and then we can have the mutual understanding. We will check out the program. We conduct the classes with the Zoom type of the software. Okay. Next. My dear friends, this is the series Digestive System Problems in General Medical Practice. And I have already talked and I have already completed anorexia topic, indigestion, then gas in the stomach, stomatitis problem, hiccup problem, constipation problem, and diarrhea problem. My dear students, my dear friends, you must look, all these things have already been uploaded on the YouTube. So please search according to your problem and you will get definitely basic infrastructure or basic information about this disease. I had also talked about vomiting, dysphagia, difficulty to deglutition, pain in the abdomen, IBS, irritable bowel syndrome. Nowadays, because of the stress, lot of people suffer from this IBS. Jaundice, I talked a lot, peptic ulcer, and now today we will talk about worms or helminth. Okay, basic management principle. In Ayurveda, it is very nicely mentioned. Sanshepatah Kriyayogo Nidana Parivarjanam. First in the English script and then in the Marathi Devanagari script. Sanshepatah Kriyayogo Nidana Parivarjanam. What does it mean? Management principle is try to avoid or remove or treat the basic causative factors. If unless and until you treat the basic things, otherwise it will be a symptomatic and superficial bandaging for your wound. Wound means your health problem. So health problem should be tackled originally. Try to find out whether there is a defective food consumption, then there is a lifestyle problem, then some side effects of the medicine. We have to go for the end depth. And if we attack at the root cause, then definitely the disease will be under control. Otherwise, everything will be superficial, symptomatic. And Dr. Deshpande believes that holistic management for treatment, for palmistry, always Dr. Deshpande likes very much this word, holistic management, considering all the different things together. Types of the worms. Roundworm, the typical scientific name, Ascaris lumbricoides. Common man should remember roundworm. My student will remember Ascaris lumbricoides. That is mandatory for their oral and exam. Then threadworm, that is Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis or oxyriasis. Oxyriasis. Then hookworm, Ankylostomata duodenal. Ankylostoma duodenal. Duodenum is a part of your intestine. So they stick to the mucous membrane. Tapeworm, Tinea solium and Tinea saginata. So these are roundworm, threadworm, hookworm or tapeworm.
either of any worm infestation or multiple worm infestation may be there in your body. Next. Now let us try to understand the clinical features. What the symptoms, what the signs, what the patient will complain, what he will suffer from. So if there are roundworms in your abdomen, in your stomach, in your intestine, due to the mechanical irritation, there will be abdominal pain. Moreover times, nowadays, not only in children, not only in the poor community, not in the unhygienic places, because many even ITMs, information technology, intelligent people, they also eat outside on the road. आम्ही त्याला मराठीत टपरी म्हणतो, स्नॅक सेंटर, स्मॉल स्नॅक सेंटर्स, and they eat over there. So they don't care how much is the hygiene, whether there is a food control examination is there. So nobody bothers nowadays. They eat, they drink whatever available, and that can cause a small creature can trouble you. So intermittent abdominal pain, then nausea, vomiting sensation, then actual vomiting, loose emotions, abdominal distension, पोट फुगतं तुमचं, rarely mechanical obstruction of the gut and in the appendix. Very rarely, but that can happen. Huge amount of worms will block the intestine, and that is called as a surgical abdomen. So maybe very rarely you have to be admitted to the hospital, operations should be done, and that whole bulk of the worms will be taken out. Very rarely these cases are I have already seen in my practice. Then roundworm, what are the toxic effects? They work as an allergen. Rather, they liberate some protein, that is ascaron or ascarase. So that is liberated, and then they causes allergic reactions. Can you see further? Urticaria, rashes, small rounded pinkish reddish. Here patches will, and that will be itching. Oh my God, here I'm itching. So this itching can be because of the worm infestation. Remember, urticaria. Sometimes fever will be there, some reflex. So your respiratory tract may be affected. They are in the abdomen. That's why here reflex effect. It will start bronchitis, cough. I have seen in my practice the many patients, they have the cough for a longer duration. You give antibiotics, you give anti-allergic, but the cough does not subside. And then, if the clever doctor gives anti-helminthic, anti-worm medicine, his cough goes. Patient cough vanishes, disappears. Why? Cough चला जाता है, खांसी चली जाती है, क्योंकि खांसी का जो ओरिजिनल कॉज था, वो न तो एलर्जी था, न तो कुछ जंतु बैक्टीरिया थी, बट उसका ओरिजिनल कॉज था हमारे पेट में रहने वाले कीड़े मकोड़े, जंत. तो वो जंत है, जो कृमि है, जो राउंडवर्म है, वो हमें खांसी देती है. That's why I have told, found out the root cause, and if you do the management for the anti-worm, then automatically cough will go. Okay, bronchitis, pneumonia, very serious but very rare. Nutritional effect. First, suffer from anemia. So if you see any person having anemia, hemoglobin less than 10 gram%, in addition to the hematinic, in addition to iron, proteins, B12, zinc, copper, mind my words, every anemic person should follow the anti-deworming. What is the word? Deworming. उसको कृमि की चिकित्सा देनी चाहिए. जिसको पांडु आजार है, जिसका हेमोग्लोबिन कम है, उसको रक्तवर्धक दवाई तो दे दे, फिर उसके साथ साथ क्या देना चाहिए आपको? डीवर्म करना चाहिए, जंत की दवा देनी चाहिए, जंत की दवा लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह से. ओके. देन पफीनेस ऑफ द फेस, सूजन आ जाती है चेहरे पर, इडिमा, पैरों पर इडिमा आ जाता है, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस ऑन द फेस, दिस इज वेरी कॉमन. जो बच्चे रहते हैं 10 उम्र के साल में, 8 से लेकर 12, 14 तक स्कूल जाने वाले लड़के, यहाँ आपको दिखाई देगा, स्पेशली ऑन द चिक्स, व्हाइट पैचेस रहते हैं, हाइपोपिगमेंटेड, सफेद कलर के दाग रहते हैं. उसको कुछ खुजली वगैरह कुछ नहीं आती, कुछ तकरार नहीं रहती उसकी. पहले तो लोगों को लगता है कि ये लेप्रेसी वगैरह, तो लेप्रेसी यहाँ पर नहीं, और व्हाइट नहीं रहती है ना. कई लोगों को लगता है ल्यूकोडर्मा तो नहीं है, नहीं, वो भी नहीं रहता.
उसको बोलते हैं पिट्रियासिस अल्बा। और ये जो डार्क धब्बे रहते हैं व्हाइट कलर के, उसका ओरिजिनल कॉज रहता है पेट में होने वाले जंत, कृमि। तो उसकी दवा दे दे तो gradually, I'm not saying on the next day, if you take the tablet of the worm today and definitely second day it will go. No, it will take 2 months, 3 months, but they will definitely go. So hypopigmented patches on the face on the children. Remember, excessive hunger without putting on weight. Very interesting. वो जो लड़के रहते हैं वो इतने खाखा करते हैं, these children having a lot of hunger. मम्मी को सताते हैं, मम्मी मेरे को भूख लगी है, मम्मी मेरे को भूख लगी है, खाना दो, ये दो, वो दो। और मम्मी तो इतनी चिढ़ जाती है, वो बोलती है इतना खाता है, उसका वजन ही नहीं बढ़ता, वो ऐसा पतला का पतला पाप का पीतर। ध्यान में रखिए, होता है, ये डायलॉग होते हैं। दिस टाइप ऑफ द डायलॉग द पेशेंट्स मदर पेरेंट्स विल कम टू यू कि ये लड़का, दिस चाइल्ड इज ईटिंग टू मच but still he is not putting on weight. The child is eating too much, but in spite of that he is not gaining the weight. What is the reason? Still he is lean, thin, पतला ही रहता है। क्यों ऐसा होता है? तो उसका कारण रहता है वर्म। तो उसको भी डिवर्म करना चाहिए, कृमि की चिकित्सा करनी चाहिए। ध्यान में रखिए। हाँ, वैसे तो क्या बोलते हैं, हमें एडल्ट में ये लक्षण है तो अलग बात है। जैसे कि एडल्ट में एक साथ साथ बता देता हूँ जो बातें हैं। कुछ 35-40 का उम्र का कुछ व्यक्ति है और उसको खाना खाने की मतलब जास्त तीव्र इच्छा हो रही है और उसका वजन बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। ध्यान में रखिए, तो उसका क्या कारण हो सकता है? डायबिटीज मेलिटस। एडल्ट पर्सन में हंगर, एक्सेसिव हंगर एंड द वेट लॉस, दिस कॉम्बिनेशन, एक्चुअली खाना बढ़ने से क्या होना चाहिए? वेट भी बढ़ना चाहिए, वो नहीं होता। तो उसका कारण एडल्ट में रहता है डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह उसको हो सकता है। उसकी तुरंत ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। जिसको खाना ज्यादा लगता है फिर वेट लॉस हो रहा है, ध्यान में रखिए। ओके, रिफ्लेक्स इफेक्ट, ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ एट नाइट, समटाइम्स कन्वल्सिव सीजर्स। देखिए, बिकॉज ऑफ द वर्म्स, ऐसे रात में ऐसा ध्यान से देखिए, इसको बोलते ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, दांत चबाना। सोते हुए लड़के को आपको ने कभी ऐसा देखा कि वो दांत चबा रहा है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ चल रही है, तो तुरंत डॉक्टर को बताइए, वो डॉक्टर डिवर्म कर देगा, कृमि की चिकित्सा देगा। वेरी रेयरली द चाइल्ड मे गेट सम कन्वल्सिव, ऐसे आकड़ी बोलते हैं ना, हिंदी में आकड़ी बोलती है, एपिलेप्टिक टाइप ऑफ फिट्स। तो लड़के को फिट्स भी आ सकती हैं कृमि की वजह से। वेरी रेयर, ये ज्यादातर नहीं दिखाई देता। फिर ध्यान में रखिए, तो क्या करना चाहिए? ये सब इसमें से कौन से भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर या रुग्ण ने पेशेंट ने क्या करना चाहिए? तो पहले हमके खून की जांच करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो एलर्जिक तरीके का एक्शन होता है वर्म का। तो देयर विल बी सम इन्फेक्शन लाइक ल्यूकोसाइटोसिस। हमारी जो सफेद रंग की पेशी है हमारे से रक्त में, व्हाइट पेशी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, WBC, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इओसिनोफिलिया, ये सफेद रंग की जो सेल्स हैं, व्हाइट सेल्स जो है, उसके अंदर इओसिनोफिल्स रहते हैं एक तरीके के, वो भी पेशी का नाम है। तो उसकी संख्या बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इओसिनोफिलिया, राइज इन द इओसिनोफिल काउंट। नॉर्मली दे शुड बी 0 to 4 मैक्सिमम %। देन ल्यूकोसाइटोसिस कितने, व्हाट, हाउ मेनी द WBC काउंट? 4000 to 11000 per cubic mm, 4000 to 11000 per cubic mm। तो ये भी बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, जरा सी भी आपको आशंका है तो पहले आपने टट्टी की जांच करवानी चाहिए। यू मस्ट एग्जामिन द स्टूल इफ यू आर सस्पेक्टिंग वर्म इन्फेस्टेशन, हेलमिंथ। ये बहुत जरूरी है। तो उसमें हम ओहा देख सकते हैं, रिपोर्ट में आ जाएगा, पैथोलॉजी रिपोर्ट में। कई कबार बेरियम मिल करके एक टेस्ट रहती है, उससे समटाइम्स फीलिंग डिफेक्ट, जब हम सॉल्यूशन पीने के लिए देते हैं तो स्टमक के पास होते समय उसमें कुछ डिफेक्ट रहेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देगा, तो ये भी हो सकता है कि वर्म की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन है, रेयरली नाउअडेज। देन एक्सरे चेस्ट, लोकलाइज्ड पैच ऑफ न्यूमोनिया, दैट इज कॉल्ड एज लोफर्स सिंड्रोम। जंत के साथ साथ न्यूमोनिया हो गया आपको तो ये कोई अलग बात है, ये कॉमन नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। फिर एक्सरे चेस्ट आपको करवाना चाहिए।
डॉक्टर की सलाह से। देन नेक्स्ट सेकंड टाइप इज अ थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म ज्यादातर उनका बेसिक जो सिम्टम है, तकरार रहती है पेशेंट की, तो क्या रहती है, बच्चों की माँ से पिता से आ जाते हैं लड़के को लेकर, ईचिंग ऑफ पेरी एनल स्किन। पेरी एनल, रेक्टल एनल, जहां से टट्टी निकलती है, वो जो होल है, वो उसके सबोताल, गुदत द्वार बोलते हैं ना, गुदत द्वार के सबोताल कभी कभार आपको खुजली आ रही है बार बार, बच्चों को भी एडल्ट व्यक्ति को भी, तो मान सकते हैं कि उधर कुछ एग्स हैं, थ्रेड वर्म उधर अंडी डाल देते हैं, तो उसकी वजह से ड्यूरिंग द नाइट द फीमेल वर्म लेज डाउन द एग्स एट पेरी एनल रीजन, गुदत द्वार के सबोताल, अराउंड द एनल ओपनिंग, दे फीमेल जो वर्म है वो एग्स डाल देते हैं, तो उससे खुजली आ जाती है, ध्यान में रखिए। तो ये बहुत टिपिकल लक्षण है, आपको भूलना नहीं चाहिए। देन यूरेथ्रल इरिटेशन, ज्यादातर वो एनोरेक्टल रीजन के पास रहने से कई कबार यूरेथ्रा जो रहता है, जहां से हम पेशाब करते हैं, मिक्चुरेशन करते हैं, वहां भी इरिटेशन हो सकता है। देन इन फीमेल्स, एडल्ट फीमेल्स, देयर मे बी वजाइनल डिस्चार्ज, वो इरिटेशन से सफेद स्त्राव निकलता है गुप्तांग से, स्त्रियों में सफेद स्त्राव आ जाता है, दे गेट अ व्हाइट डिस्चार्ज, दैट इज वजाइनल डिस्चार्ज, मे बी व्हाइट, मे बी लिटिल बिट ब्राउन। नॉक्चूरिया, व्हाट डज इट मीन? नाइट को बार बार पेशाब के लिए आपको उठना पड़ता है, स्पेशली देयर आर सम चिल्ड्रन, दे आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ बेड वेटिंग। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड, बेड वेटिंग? बेड वेटिंग, पेशाब अंथरुण में, हमारे बेड में सोते के समय हम जो डालते हैं, तो बेड में ही ये बच्चे 6 साल होने के बावजूद पेशाब करते हैं सोते समय, सो मतलब रात में, उनको पता नहीं चलता हमने पेशाब कर दिए, तो उसको बोलते हैं बेड वेटिंग। तो इसका भी एक कारण कृमि हो सकता है, ध्यान में रखिए, एक कारण मैं बता रहा हूं, मैं नहीं बता था कि एक वही कारण है, फिर आपको ढूंढ लेने की जरूरत है। दिस इज अ वेरी कॉमन कॉज, नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है, नॉक्चुरनल, नॉक्ट मींस रात का समय, एन्यूरेसिस ज्यादा यूरिन पेशाब हो जाता है बच्चों में ज्यादातर। डायरिया, कई कबार लोगों को अतिसार बोलते हैं, डायरिया, लूज मोशन भी हो सकते हैं, है ना। थर्ड टाइप, हुक वर्म, थ्रेड वर्म के बाद हुक वर्म बता रहे हैं। ड्यूरिंग माइग्रेशन ऑफ द लार्वी, क्रीपिंग इरप्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लार्वा wanders about through the skin in aimless manner, producing the reddish itchy pacule। क्या बोल रहे हैं हम कि ये जो लार्वी रहती है, उसकी जो बारीक सी शुरुआत की अली रहती है, जंत रहता है, वो इधर उधर घूमता है स्किन पर, और वो घूमते समय हमारी ईचिंग हो जाती है, कुछ पैचेस भी आ जाते हैं और ईचिंग भी हो ज्यादातर हो जाती है, वो हुक वर्म का है। व्हेन लार्वी रीच एल्वियोलर स्पेस, घूमते घूमते अंदर से जा रहे हैं, तो ट्रैवल अपवर्ड्स एंड दे कॉज द, खांसी की जो शिकायत है, ब्रोंको निमोनिया बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हुक वर्म से पैदा हो सकते हैं। Externally also you get the skin problem, internally also they move through the blood, reach to the lungs, and then they cause the reflex type of the cough। मैं बार बार कह रहा हूं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, ध्यान में रखिए। When larvae reach the stomach and intestines, बाय चांस वो स्टमक में चले गए तो वोमिटिंग हो जाएगा, आमाशय बोलते हैं ना, कभी कभार नीचे चले गए, इंटेस्टाइन, आंत, आंतड़ी में चले गए, तो डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज बिकॉज ऑफ सकिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टिनल वॉल बाय पैरासाइट। हुक वर्म से, ये राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म से ज्यादा एनीमिया किससे होता है? एक वाक्य बताइए, एक सेंटेंस बताइए, एक शब्द बताइए, हुक वर्म। तो जब भी एनीमिया रहेगा तो आपको उसको स्टूल एग्जामिनेशन करवानी चाहिए, एचबी के साथ साथ स्टूल एग्जामिनेशन करनी चाहिए, और उसमें कुछ अंडी पा गई, ओवा पा गए, सिस्ट देख लिया पैथोलॉजिस्ट ने, तो आपको क्या करना है, वो पेशेंट को डीवर्म करना है, ध्यान में रखिए। कई कबार क्या आ जाता है, हिमरेज फ्रॉम द पंक्चर्ड साइट्स, जहां पर भी वो उनकी बाइट करते हैं, सक लेते हैं, उधर उधर कैपिलरी ब्लीडिंग हो जाता है। डिप्रेशन ऑफ द बोन मैरो बाय ए टॉक्सिन जियोफेजी, उसको बोलते हैं जियोफेज,
तो कभी कभी, वेरी रेयरली, बट वो डैमेज कर सकता है। बोन मैरो का मतलब है हमारी हड्डियों के अंदर जो स्निग्ध पदार्थ रहता है, जहां में हमें खून बनता है, जहां पर हमारा आरबीसी फॉर्म होते हैं, डब्ल्यूबीसी फॉर्म होते हैं, प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं, वो बोन मैरो बोलते हैं। हड्डियों के अंदर इनसाइड द बोन देयर इज अ बोन मैरो, सो देयर दे कैन डैमेज। देन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट, हमारी जो आंतड़ी है, हमारा जो स्टमक है, पेट है, उसमें गड़बड़ी गड़बड़ी रहती है हुकवर्म के बाद। देन और क्या है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, उस आदमी को बिकॉज ऑफ द एनीमिया, बिकॉज ऑफ दिस इंफेक्शन हुकवर्म, उसको दम छाटता है, हाँ, ब्रेथलेसनेस हो जाता है, चलते चलते वो रुका, थक जाता है, हाँ। देन एनासार्का, some of the medical words, एनासार्का, many of you might have been thinking why Dr. Deshpande is speaking intermittently now Hindi also, because there is a lot of demands from my YouTube fans that sir आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें कहते हैं, you are saying as a so big and good knowledge, but we are deprived because we do not understand, because of their own problem that they cannot understand the English language. They say sir थोड़ी थोड़ी बातें हिंदी में भी कर दीजिए, speak something in Hindi also. So now henceforth I have decided, तो इंग्लिश तो सबको आती है, so English will be understood by everybody, but side by side I will talk also in little bit Hindi, तो दोनों लोगों को फायदा मिल जाएगा, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी, है ना। तो एनासार्का ये मेडिकल टर्म है, स्वेलिंग और द एडिमा ऑल ओवर द बॉडी, पैरों पर सूजन है, हाथ पर सूजन है, चेहरे पर सूजन है, पेट पर सूजन है, सभी जगह पर जब सूजन होता है तो उसको मेडिकल में क्या बोलते हैं, यहां दिखा देखिए, कर्सर देखिए, एनासार्का, एनासार्का। देन अनदर थिंग फॉर द हुकवर्म, पाल्पेबल लीवर एंड स्प्लीन, जो लीवर रहती है हमारी दाहिने बाजू में, राइट साइड देयर इज अ लीवर एंड लेफ्ट साइड देयर इज अ स्प्लीन। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वो पाल्पेट नहीं होती, जब दबाते हैं डॉक्टर लोग, when doctor examines by palpation, liver and spleen are not palpable in healthy individual, बट जब भी कुछ पैथोलॉजी बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ज्यादा बन गया तो हिपैटोमेगेली एंड स्प्लेनोमेगेली, उसका साइज बड़ा हो जाता है, उससे हम अनुमान कर सकते हैं कि इसमें एनीमिया हो सकता है, इसको हीमोग्लोबिन की जांच कीजिए, इसका स्टूल टट्टी जांच कीजिए, है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, हीमोग्राम, ब्लड की, खून की जांच करनी है लैब में जाकर, उसमें क्या देखेगा हमें, एनीमिया देखेगा, पांडु बोलते हैं ना, खून की कमी दिखाएगी। हीमोग्लोबिन नॉर्मली कैसा रहता है, 12 to 14 या 14 to 16 ग्राम %, वो आपको क्या दिखाई देगा, 10 ग्राम से नीचे है, 9 ग्राम है, 8 ग्राम है, 7 ग्राम है, बार बार नीचे आ रहा है, तो उसको मॉर्फोलॉजी क्या दिखेगी, उसका जो कलर है हाइपोक्रोमिक, जो रेड कलर के सेल्स है, we cannot see the red color, it will be pale, pale, so colors become less. Then जैसे मैंने कहा, this is the type of white blood cell, eosinophils, वो ज्यादातर एलर्जिक की रिएक्शन से बढ़ जाते हैं, तो eosinophilia का मतलब है the raise in the eosinophil count। स्टूल देखे हमने, जांच करवा दी लैब में, पैथोलॉजी लैब में, उसमें ओहा मिल जाएगा। और एक टेस्ट है, ध्यान में रखिए, हुकवर्म के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, you must write to the pathologist that I am suspecting hookworm infestation, please do the test occult blood, उसको बोल दीजिए पैथोलॉजिस्ट को सेपरेटली। नॉर्मली ये देखो, कर्सर देख रहा हूं मैं, अभी इधर बता रहा हूं, नॉर्मली occult blood ये टेस्ट नहीं की जाती unless and until it is demand from the medical doctor, so you must say मेरे को चाहिए वो रिपोर्ट occult blood। क्या मतलब है occult blood का, ऑक्टल ब्लड का मतलब है हमारी टट्टी में खून जा रहा है, फिर वो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है मेरे को, रेड कलर का स्टूल नहीं है मेरे को, तो इतना माइन्यूट कैपिलरी ब्लीडिंग रहता है, थोड़ा 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 करके आंतड़ों में रक्तस्राव हो रहता है, और वो जो ब्लीडिंग है माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, वो स्टूल में बनकर आ जाता है, आरबीसी जो है, रेड सेल जो है, वो खून में आ जाता है, टट्टी में आ जाते हैं, तो उसको वो ढूंढने निकालना है कि वेदर माय स्टूल कंटेन्स एनी ब्लड, वेदर माय स्टूल कंटेन्स एनी आरबीसीज, तो उसको टेस्ट को बोलते हैं ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब है हिडन, हमारी नजर नहीं आ रहा है, छुप गया है, वो छुप जाने वाला जो चीज है उसको बोलते हैं ऑकल्ट।
है ना। तो ऑक्कल्ट ब्लड का मतलब है छुपा हुआ जो ब्लड है वो हम टेस्ट के माफिक पता कर सकते हैं है या नहीं है ना। तो ये बहुत ही ज्यादातर उसकी आशंका कब आ जाती है, व्हेन यू गेट डाउट द स्टूल कलर इज ए ब्लैक टैरी कलर। इसका मतलब है डांबर जैसा रहता है ना, हमारे रस्तों पर काम करते समय डांबर लगाते हैं, तो काला रंग का जब हमारी टट्टी आ जाती है तो उसमें हो सकता है कि ये ऑक्कल्ट ब्लड है, छुपा हुआ ब्लड है ना। फोर्थ टाइप इज अ टेप वर्म। दिस इज नॉट कॉमन इन द वेजिटेरियन, दिस इज नॉट कॉमन। जो मांसाहारी लोग हैं उन्होंने बहुत सावधान होना चाहिए। नॉनवेज खाने वाले जो भी लोग हैं, ये ज्यादातर मैंने इधर लिखा है, जो पोर्क और बीफ खाते हैं, जो पोर्क और बीफ खाते हैं उसमें टेपवर्म की संभावना ज्यादा है। देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी दैट द पोर्क एंड बीफ ईटर्स विल गेट द प्रॉब्लम ऑफ टेपवर्म। सभी लोगों में ये नहीं पाया जाएगा, है ना। तो मोस्टली टेपवर्म कैनॉट कॉज डायरेक्टली एनी सिम्टम्स। समटाइम्स दे हैव द एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द करता है, लूज मोशंस, knowledge of its presence in the intestine and passing segments in the stool are distressing। वो निकलता है, उसके टुकड़े टुकड़े निकलते हैं हमारे टट्टी से। टेप वर्म के शरीर के टुकड़े टुकड़े व्हाइट कलर के पीसेस निकल आते हैं। देयर विल बी पीसेस दैट यू विल सी इन योर स्टूल इफ यू ऑब्जर्व द स्टूल बाय चांस, देन देयर विल बी व्हाइट कलर सम स्ट्रिप्स और पीसेस देखेंगे आपको, ये उसके शरीर के टुकड़े रहते हैं टेप वर्म के। तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, टिपिकल ओहा और एडल्ट सेगमेंट वो पैथोलॉजिस्ट देगा आपको, रिपोर्ट देगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ना ट्रीटमेंट पार्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक, ये बहुत खासियत है। अभी इस दिनों में ये राउंड वर्म है या हुक वर्म है या टेप वर्म है, ठीक है, सिम्टम से हमको अंदाज आ गया, फिर ऐसी जरूरत नहीं है कि ये समझा गया तो ही हम उसकी चिकित्सा कर सकेंगे, उसका उपचार कर सकेंगे। कौन सा भी वर्म हो, राउंड वर्म, देन थ्रेड वर्म, हुक वर्म एंड टेप वर्म, जैसे आपने चार बता दिया ना हमने, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म एंड टेप वर्म, कौन सा भी हो उनको सभी को ये दवा बिल्कुल फायदेमंद हो जाएगी। उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कौन सी भी जंत हो, आप क्या ले, पहले हम क्या देते थे, मेबेक्स टैबलेट दे देते थे, मेबेंडाजोल है उसमें, ये जो है वो उसको बोलते ट्रेड नेम, दिस इज अ ट्रेड नेम एंड जेनेरिक नेम इज मेबेंडाजोल। सो वन टैबलेट इन द मॉर्निंग, वन टैबलेट इन द इवनिंग फॉर only 3 days, 6 tablet course, remember this thing। But my dear friends, if you are not doctor, if you are a layperson, don't take any medicines from any video. I am Professor Deshpande is never recommending self-medication. Professor Deshpande is saying, please consult your family physician, doctor, or even Dr. Deshpande, and then only you can take some tablets. Okay? But nowadays, this is little bit outdated. चला गया वर्ड। अभी कौन सी दवा चल रही है, अभी ये झेंटेल चल रही है। झेंटेल इज अ ब्रांड नेम, कंपनी का दिया हुआ नाम है। आई एम नॉट सेइंग ओनली यू शुड टेक द झेंटेल, somebody will, Dr. Deshpande is making a marketing of this company, no no, so I am telling also the generic name. But why I am telling this name, because this is common, everybody knows this tablet Zentel. The content is albendazole. Albendazole is a generic name, maybe Zentel is a brand name, proprietary name. You must understand the two things separately. So albendazole 400 milligram, only one tablet course. How fantastic! Can you see the development in medical faculty? Can you see how much is the progress in the medical fraternity? So in spite of 3 days, in spite of one tablet 2 times in a day, only a single tablet and just chale gaye. But this is again, I will say, the symptomatic management. We have to take precaution for a longer time, not to eat outside roadside food, never, never. Be very cautious what you eat and what you drink, because contaminated food and contaminated water is the original source of the worms. Hygiene is most important, because more times it is a fecal-oral route. I am not going into the pathology.
बट हमारे बच्चे को नॉट इन द कोरोना पैंडेमिक हमेशा हाथ धोने की आदत बनानी ही चाहिए। आपको कोरोना प्रिवेंट करना हो या आपको वर्म्स प्रिवेंट करना हो, सबसे जरूरत बात जो है वो हाइजीन है, स्टरलाइजेशन है, शुद्धता है। हमारी जीवन में शुद्धता की महत्वता बहुत ही है। So शारीरिक, वाचिक, मानसिक purity should be there. So basically we are talking about cleaning of your hands, cutting the nails, most important. Your child, for example, is having threadworm, so there will be itching in the गुदद्वार के, वो अवतार होता खुजाने लगा और बाद में क्या करेगा, बिना धोते हुए चपाती खा लेगा, तो उसको बोलते हैं फीको ओरल, वो अंडे हमें फिर वो खा लेगा। ये बहुत गंदा लगता है सुनने के लिए भी, फिर मानो ये होता है, बच्चों से होता है, तो हमारी पूरी ध्यान होनी चाहिए। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्लम एरियाज, पुअर एरिया, बिकॉज दे डोंट हैव द इनफ रिसोर्सेस, they have never good income, and they are careless about the cleanliness. So cleanliness is most important in addition to this gentile and mimics. Not only these slum and poor areas I am talking about intelligent people, I am talking about IT people also, remember my words, because these are also nowadays they found careless. They don't see where you are eating on roadside food they are eating, how they are cleaning their dishes. Have you seen any time? Just they put in the stored water, which is very dirty, put it and they take out the cloth. Cloth is also so dirty. They clean it and they give the plate and eat the dosa. It is happening. I am seeing this on the roads. So you be careful. Other specifications in the threadworm infestation, antihistaminic, खुजली कम करने वाली मलम है ये। एंटीहिस्टामिनिक का मतलब ही है एंटी एलर्जिक, है ना। वो क्या है, जेंशन वायोलेट करके ब्लू कलर का आ जाता है, नीला कलर का। सो जेंशन वायोलेट जो है ना, वो कॉटन से, डॉक्टर की सलाह से, वो पेरिएनल रीजन को, गुदद्वार के सबोतर, रात को सोते समय वो लगाना चाहिए। उसके ऊपर कुछ कापूस रखकर उसको कुछ बैंडेज भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेरी ध्यान से सुनिए, this gentian violet can stain, STAIN, to your cloth. ये डिब्बा बन सकता है आपके कपड़े के ऊपर। So be careful while applying the gentian violet, but this is very cheap and this is very good external application for the threadworm। खुजली आ जाती है गुदद्वार के सबोतार। टेपवर्म के लिए अलग कुछ दवा है स्पेसिफिक, जिसको निक्लोसान बोलते हैं। 500 मिलीग्राम 4 tablets stat on empty stomach in the morning and then 2 tablets per day for 6 days। बड़ा लंबा चौड़ा कोर्स है। फिर कई कबार ये टेपवर्म very difficult to treat, that's why I have mentioned this specific tablet which is very specific for tapeworm, निक्लोसान 500 मिलीग्राम 4 tablet। स्टैट का मतलब है एक दफा, 2 3 4 ले लिया तो उसको बोलते हैं स्टैट। तुरंत लेना है हमको और बाद में मेंटेन करना है 2 tablets, 1 in the morning 1 in the evening for, here लिखा है, can you see the cursor, 6 days। Now worms in Ayurveda, कई कबार लोग बोलते हैं सर थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद की भी बताइए। कई लोग ऐसे बोलते हैं सर आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ये सब बातें मॉडर्न की भी आप कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, काइंडली नोट दिस पॉइंट। आई एम ऑलवेज सेइंग दैट नो पैथी इज परफेक्ट। इन आयुर्वेद के कोर्स में हमें एलोपैथी भी सिखाई जाती है। हमारे जो काउंसिल है, उन्होंने जो एजुकेशन की यूनिवर्सिटी में कोर्स बनाया है, उसमें एलोपैथी आयुर्वेद दोनों चीजें हमको पढ़ाते हैं और दोनों चीजों की प्रैक्टिस लड़के कर सकते हैं। मैं अभी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ, ध्यान से सुनिए। फिर नॉलेज मैं बता रहा हूँ, नॉलेज वो सबका होना चाहिए। ये मेरी खुद की क्या बोलते हैं खाविश है, तो ये होनी चाहिए आपका खुद। यू मस्ट हैव द नॉलेज थरली ऑफ एलोपैथी, आयुर्वेद एंड लिटिल बिट मे बी होम्योपैथी, बट आई बेसिकली हैव द गुड नॉलेज ऑफ एलोपैथी एज वेल एज आयुर्वेद। प्रैक्टिस तो अभी आयुर्वेद की हम कर रहे हैं, है ना। तो नॉलेज से कोई ये नहीं है। बेस्ट पैथी इज सिंपैथी, because every pathy has its own plus and minus points. Now we will talk about Ayurved. आयुर्वेद में एक कृमि कंसेप्ट है, उसको मैनेजमेंट में 3 चीजें बताई गई हैं, ध्यान से सुनिए। अपकर्षण, ये संस्कृत शब्द है, मैं बता दूंगा उसका मीनिंग भी लिखा है आगे के लाइन में। I have explained the meaning of it, but original Sanskrit words. Some are very interested to learn Sanskrit. So अपकर्षण, even foreigners they are interested. That is expulsion of ova,
प्रकृति विघात, वेरी इंपॉर्टेंट, टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट और ओवा। क्योंकि जंत में क्या पाया जाता है कि ये बार बार होने की कुछ आदत कई लोगों में दिखाई देती है, तो हमें वो टेंडेंसी ही निकाल देनी है। उसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सर हमने तो वो जैसे आपने बोला मेबिक्स टैबलेट ले ली या कुछ अलग टैबलेट आपने कहा वो भी हमने ले ली, फिर हमें लगता है कि ये शिकायत मेरे को बार बार परेशान करे, सब कुछ आयुर्वेद के बारे में बताइए। तो उसको बोलते हैं प्रकृति विघात। ध्यान से सुनिए। और निदान परिवर्जन, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको इसमें सावधानी बरतनी है, खाने पीने की मामले में स्वच्छता के बारे में अब बहुत जागरूक होना चाहिए। यू शुड बी वेरी कॉशियस। एक चीज मैं आपको बता देता कैसे आयुर्वेद की खासियत है ना, ध्यान में रखिए। आयुर्वेद की खासियत देखिए, जब हम कृमि की चर्चा करते हैं ना, when we talk about कृमि worms, आयुर्वेद is talking about कफ प्रकोपक आहार। कफ प्रकोपक आहार, ये जो कफ हमारे शरीर में है, कफ दोष बोलते हैं, कफ एनर्जी बोलते हैं, उसका कुछ बिगाड़ हो जाता है, उसमें कुछ बिगाड़ होने से ये वर्म की आदत रहती है। और ये कफ कैसे बिगड़ता है, तो जो लोग ज्यादातर स्वीट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मीठी मीठी, हमें बातें नहीं, मैं खाने की बात कर रहा हूं, सब मीठी मीठी चीजें, जैसे कि जैगरी है, गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा ज्यादा कर जाते हैं, है ना। तो ये गुड़ का इस्तेमाल आयुर्वेद कहता है कि इट्स, उसको एक एनवायरनमेंट बना देती है कृमि को डेवलप होने के लिए। जो लोग ज्यादा स्वीट खाते हैं, जो लोग दिन भर में सोते हैं खाने के बाद, उन पे ये आराम से रहते हैं, जंत जो है ना आराम से रहते हैं। तो हम ये भी चीजें पता कर देते हैं। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, सिर्फ हम स्टूल एक जो रिपोर्ट देख लिया और चलो ये आपका हम कृमि घ्न चिकित्सा दे देंगे, एंटी एलमिंथिक ट्रीटमेंट दे देंगे, ऐसा आयुर्वेद का हिसाब नहीं रहेगा। आयुर्वेद इज मैनेजिंग ईच एंड एवरी पर्सन, अंडरस्टैंडिंग हिज ओन डेली रेजिमेंट, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, कौन सी टाइम पर सोता है, ये सब चीजें हर एक रोग में महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिए। नाउ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, these are again some basic names of the medicines, but this is not the only medicines. There are lot of medicines and we plan for each patient separately. जब मेरे पास कुछ कंसल्टेशन के आते हैं तो ये सब ठीक है, इसमें से मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं है, फिर मैं कह दूंगा कि उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। कृमि मुद्गर रस, दिस इज द नेम ऑफ द टैबलेट, 2 टैबलेट विथ सतापा काढ़ा। दिस इज नॉट फॉर सेल्फ मेडिकेशन, दिस इज फॉर द टीचिंग पर्पज टू माय स्टूडेंट्स। तो ये टैबलेट हमें प्रिस्क्राइब करनी है, 2 टैबलेट्स विथ सतापा काढ़ा। काढ़ा का मतलब है डिकॉक्शन। 4 teaspoon with 4 teaspoon of water 2 times in a day, morning, after lunch and after dinner. Aragvad Kapilavati, Aragvad Kapilavati, 2 tablets at night before going to bed with warm water. इसमें जो कपिला है वो कृमिघ्न है, और आरगवद जो है वो टट्टी से निकाल देने वाली दवा है, आरगवद बहावा बोलते हैं हम। Above medicines for 1 week, then we have to finish द इनर, जो भी उसके कुछ पीछे छूटे हुए जो एलिमेंट्स है उसको हमें निकाल देना है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, हमारी जो म्यूकोजल लाइनिंग्स है, उसको क्लीन करवा देना है। उसमें कुछ भी सिस्ट ओवा नहीं होनी चाहिए, उसकी निर्मित भी नहीं होनी चाहिए। वो स्टॉप करने के लिए हम पैलेटिव ट्रीटमेंट, आगे चलकर मेंटेनेंस डोज क्या देते हैं, विडंग अरिष्ट। ये लिक्विड है, आयुर्वेदिक मेडिकल लिकर है, तो विडंग वाउडिंग बोलते हैं मराठी में, विडंग अरिष्ट 4 teaspoon with 4 teaspoon of water every day morning for 1 month. All the doses are for adult, all the medicines not for self medication. This is nearly end of the topic but not end of the lecture, so please don't leave your place. Management, Ayurveda always say ahar, vihar and aushadhi. Whenever the person comes to Dr. Deshpande for any complaint, it may be the complaint of heart problem, respiratory asthma, it may be psoriasis, it may be rheumatoid arthritis. So I manage the patient with diet. Diet की कुछ सलाह, पथ्य बोलते हैं, lifestyle is more important, and then comes the medicine.
तो लाइफस्टाइल में हम सलाह देते हैं आपके एक्सरसाइज कौन सी करनी है, योगा कौन सा करना है, आपको ऑक्यूपेशन क्या होनी चाहिए, आपको क्या परहेज रखना, सब चीजें हम बता देते हैं ना। देन disclaimer: Dr. R. Deshpande is preparing these audio videos and publishing on the YouTube channel. The sole purpose, only purpose is education, education, and education to the medical students, teachers, medical practitioners. So it can indirectly help to increase the general knowledge of the layman, common man. But self-medication without consultation to doctor should strictly be avoided. If anybody does by chance, Professor Dr. Deshpande, that is myself, is not at all responsible for any unwanted consequences. So take care. So these are some of my books that are available in the market. This is Ayurved for General Practitioner. Ayurved for General Practitioner. Here you can see proficient publication. My dear friends, just go on the Google and type these words, proficient publication. Website is there, and in that website you must search for this book and then directly communicate to that publisher. They will send you the book by their mode of transfer. So this is very good book because 100 common symptoms of general practice, causes and investigations, and Ayurvedic treatments. Can you see? 100 things, 100 problems coming into the general practice. Their causes are mentioned, differential diagnosis, investigations are mentioned, and Ayurvedic treatment is given. So this book is very good for the general medical practitioner. Clinical examination. This is also one of the best book. This is published by Narendra Prakashan, Pune. This is also available, so you can search on the Google. Here I had given two sections are there. One is the allopathic modern way of examination, and another is Ayurvedic way of examination. Digestive system examination, respiratory system examination, nervous system examination, cardiovascular system examination, सब की सब चीजें दी हुई है। और दूसरी दफा क्या दिया हुआ है, स्रोतस परीक्षण कैसी करनी चाहिए, प्राण व स्रोतस कैसे देखना चाहिए, रस व स्रोतस कैसे देखना चाहिए, रक्त व कैसा देखना चाहिए, स्रोतस शुक्र व स्रोतस कैसा देखना चाहिए। थर्ड सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैन यू सी कर्सर, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लैब टेस्ट, जो भी हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उसका क्यों करते हैं, उसका मायना क्या है, what are the indications, what are the benefit of doing these investigations, that are explained in this particular section. Medicine notes for the students and doctors, Narendra publication. I am doubtful whether this book is now, sometimes I heard it is out of print, but whenever there is out of print, you can mail me, remember, professordeshpande@gmail.com. Then I will try to send you with particular payment some PDF, and that will be password protected. So I can send some books. So this is a medical dictionary. This is from Anmol publication. You can search on the Google. Then these books mostly out of stock in the market, but I can send you the PDF. Preventive Cardiology and Ayurvedic Management. This is, many authors are there, Dr. Subhash Ranade, Dr. Deshpande, and Professor Podda. So here all the hypertension, CCF, angina, myocardial infarct are all described and discussed. Okay, digestive problem and Ayurvedic management. These, you mail me, you demand me these books, and I can send you the PDF of these books. Okay, so these are the different problems, gastrointestinal problems like acidity, pain in abdomen, constipation, colitis, etc. Okay, Gynaecological Problems, best book for GP. All gynecological problems like heavy bleeding, white discharge, infertility, cancer are discussed with Ayurvedic management. Arthritis, backache, and Ayurvedic management. This is the best book for joint problems like osteoarthritis, rheumatoid arthritis, backache. But this is for mainly for the doctors, so they can refer this particular PDF. But you have to write me mail, not the WhatsApp. Please, please. One line, 9226810630. That's the number. You can contact me. You can tell me your name, address, who are you, whether you are a student, whether you are a doctor. But finally, if you want this book PDF, you must send me the mail only.
Remember, I cannot send with the WhatsApp. Remember, neurological problems and Ayurvedic management. Ayurvedic concept of diet and nutrition. So this is all about Prakruti and dietary prescriptions. Okay. Health tips for 365 days. This book is in Marathi. Kindly note. This book is for common man. So those who are seeing my video and are not medical doctors, this is book for you, common man. Because you, all of you want to learn health knowledge, Ayurvedic knowledge that is very nicely given in this book. This book is very useful for common man up to the doctors. It covers all important aspects mentioned in Ayurveda, open as per the date and complete reading of one page only. How we construct? Here in this book, 365 pages are there. 365. What is that? That is why the name. Can you see? Dainandina Arogya Gatha. Daily, Dainandina, every day, you must digest one concept of health, one concept of Ayurveda. So there are 1 January, 2nd January, 3rd January, up to 27 December, 28, 29, and 31st December. So every day, one page. Every day, one page. Best book in Marathi. That is also available on Amazon. Please search on Flipkart and Amazon. You will definitely get type Dainandina Arogya Gatha. But this is useful for Maharashtrian locality or worldwide who can understand Marathi language because the book is in Marathi. Kindly note that point. So I think this is nearly end of our today's lecture and I wish you all the best. Please take good care of yourself. Thank you very much for your love and affection and I wish you all the best. We will see you soon. Thank you. Okay. So this is, I am ending this particular lecture. Thanks. Bye-bye. Take care.